So our next chapter is of light. This is the second last chapter of this wave part. First chapter is of general properties of waves. Second, we discuss about sound. Third one is light, and the fourth one is of electromagnetic spectrum. So after completing these four chapters, our complete part of topic wave is completed. So we will solve the detailed and short questions related to these chapters, right? Yes. So starting with the light wave, or if we discuss about the nature of light, we already discussed in the chapter of properties of wave. So if you want to define what is the nature of light, is it transverse or longitudinal? Transverse? Yes, very good. It is transverse in nature, and it does not require any medium to travel from one place to another, right? Yes. So light requires no medium to travel because this is transverse in nature. So no medium is required by light to travel. And if we want to discuss about the speed of light, is it greater than the sound or less than the speed of sound? Greater? Yes. So speed of sound will be less than speed of light, and the speed of light will be equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? और जनरली अगर हम डिस्कस करें हमारी अर्थ पर, तो इससे ज़्यादा फास्ट हमारी अर्थ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई पार्टिकल इतना फास्टेस्ट नहीं है जो ऑलमोस्ट इसकी स्पीड को टच कर सके या अप्रोक्सीमेट कर सके इसके इक्वल। So this is the fastest wave on our Earth or in many other planets also. So this is very much fast. You can observe that 3 into 10 to the power 8 meters can be covered in a single second, right? So this is the fastest wave on our Earth or in our daily life we observe. So the speed of the light is equals to 3 into 10 to the power 8 as compared to the speed of sound. So many thousand times greater than the speed of sound, right? Yes. And if light is going to be reflect with some different objects, like there are different type of object in our daily life. So let's suppose if light is going to be reflect from opaque object, तो opaque object या एक solid object से strike करने के बाद light का reaction क्या होगा? Light will reflect or pass through it. Reflect? Yes, because opaque is a solid material, there is no space for light to pass through it. So after striking from the solid material or opaque material, light is going to be reflect back, same as in the case of ripple tank. And if light is going to pass through the transparent material, so light is going to be reflect or It, refract. it will pass through it? Yes, but after some refraction, because there is a change of medium. So light is normally traveling in air medium, which is rare, and after passing through a transparent glass or water or something else, so due to the change of medium, so light is going to be bent or refract through passing the surface, right? Yes. Same phenomena goes to be repeated here. Same we discuss in the ripple tank for waterways. So now we have to discuss all those properties for the light concept or light waves. So if we first discuss about the reflection of light, so if we discuss about reflection of light,
or you can say that the law of reflection for light waves. So according to the law of reflection for light or any wave, we already discussed in ripple tank, if you remember, that angle of incidence will be equal to angle of, Reflection? yes, very good. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. So the first basic principle or the law of reflection states that angle of incidence will be equal to angle of reflection. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. So this is the law of reflection. So this is the same phenomena we already discussed in the water waves of ripple tank, right? And now if we discuss about some new concepts which is related to the light's reflection. So now there are some type of new rays, or you can say that the beam of light which are moving in a straight line or with some angle. So now we have to identify those rays and remember and discuss about different type of rays in the reflection process, refraction process, and diffraction process, right? So starting from the law of reflection, okay, let's suppose if there is a reflecting surface or a mirror placed in front of a light wave. So let's suppose this is a reflecting surface or a mirror, and there is a light beam or a light ray which is going to be reflected on this surface. With some angle, right? And how can you measure the angle of incidence? Any idea? Is it 90 degrees? Yes, 90 डिग्रीज के लिए आप पहले एक लाइन ड्रॉ करते हो, रेफरेंस लाइन, जो हमने रिपल टैंक में डिस्कस किया था। उस लाइन को हम साइंटिफिक टर्म में लिखते हैं नॉर्मल लाइन, राइट? So we need to draw a perpendicular line which is perpendicular to the reflecting surface, right? So this is our surface and we need to draw a perpendicular line which is known as normal line. Okay, so this is our normal line, and now you can easily measure the angle of incidence from here, right? Yes. And what will be the angle of wave after reflecting from the surface? Will it be a mirror image to this? Yes. And how can you identify the angle of reflection? If I It equals angle. yes, angle equal to the angle of incidence. So angle is going to be in the same direction or same orientation as compared to the angle of incidence, right? So this is our angle of reflection, right? So according to the law of reflection, angle of incidence must be equal to the angle of reflection, right? So this Yes. is how we can calculate the angle of incidence and reflection from any smooth surface, right? So this is the condition of a smooth surface. And if there is a rough surface,
So how can you calculate the angle of incidence and reflection on that rough surface? Any idea? No. Okay, let's suppose there is a rough surface, because law of reflection is same for always in all conditions, right? So we just need to identify that how can we calculate the angle of incidence and reflection on some irregular or rough surface. Let's suppose there is a rough surface, a kind of surface like this. You can see there is no uniformity between any surface or any point in this surface. So if let's suppose there are three waves going to be, or two different waves are going to strike this surface. Let's suppose one wave is going to be hit on this part of the surface, right? And the other one is going to be strike on this point of the surface, right? So there are two types of waves which are going to strike on this rough surface. तो जो rough surface से waves strike कर रही हैं, अब हमने इनका angle of reflection calculate करना है. तो कैसे calculate करेंगे? Any idea? Is it the same way as before? Yes. So first of all we need to draw a normal line, right? लेकिन नॉर्मल लाइन को आप ड्रॉ कहाँ पे करोगे? इस बार तो इरेगुलर सरफेस है. और नॉर्मल लाइन के बारे में अभी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन की, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नॉर्मल लाइन जो होगी आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के. सो नॉर्मल लाइन विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द reflecting surface. So now I think it will help you to identify the direction of normal line. अब क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर का है तो हमेशा हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, राइट? तो अगर हमारे पास ये इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट है सरफेस का, तो आप अगर इस पार्ट को एक स्ट्रेट पार्ट कंसिडर करते हो, ठीक है, तो आप इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट? और यहाँ पर भी जो है वो आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन हम इसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? So we can simply draw a perpendicular line which is on 90 degree to this surface, right? तो इतना स्पेसिफिक आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम रफ सरफेस के अकॉर्डिंग भी अपना एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is our normal line, or this is our also a normal line. So if waves are going to be hit with some different angle, ये बहुत क्लोज हो गया हमारे लिए, हम इसे थोड़ा सा ग्रेटर एंगल से ड्रॉ करते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए. तो अगर लाइट रे और आपके पास कोई भी वेव इस एंगल से आकर हिट करती है तो वो सेम एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट? तो अब आप इजीली जो है वो रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करके दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉर्मल लाइन है, तो आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? एनी कंफ्यूजन? Mm. थोड़ा सा मेरा यहाँ एंगल डिस्टर्ब बना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नॉर्मल के अकॉर्डिंगली हमारे पास सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, राइट? Yes. और अगर हमने अभी एक
यहाँ पर रे की बात की जो कि परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल, ठीक है। और अगर हम इस फर्स्ट रे को आइडेंटिफाई करें तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं? इंसिडेंट रे, राइट, because this is the first ray which is going to strike the reflecting surface, right? Yes. And what about the second one? Reflected ray? Re- Yes. So this is the reflected ray. So we observe three different types of ray in the law of reflection also. One is normal, and you have to remember which is always perpendicular to the surface. And the first one is incident ray, which is going to hit the surface, and after reflecting from the surface, the next wave is known as reflected ray, and a line which is always perpendicular to the surface is known as normal line, right? So any confusion? yes. It's clear. Okay, very good. So these are three types of rays, and there are two types of angle. One is angle of incidence and one of angle of reflection, right? Yes. So there are two types of reflection we observe. One is from the smooth, and if you want to write the name for this reflection, so the name of reflection from the smooth surface is known as regular reflection. This one is known as regular reflection because it is reflecting from a smooth surface. So as many as light rays are going to reflect from this surface are going to reflect from the same pattern. And if we discuss about the rough surface, so this reflection is known as diffuse reflection or irregular reflection, right? So these are terms for these different types of reflection from different surface. Okay, so moving towards new topic. कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिक था। No, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ प्लेन मिरर्स। बिकॉज नॉर्मल जो सरफेस में हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट सरफेस जो स्मूथ और रेगुलर हमारी रिफ्लेक्शन में यूज होता है दैट इज प्लेन मिरर्स, राइट। हम डेली लाइफ में मिरर्स यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और many of them are plane mirrors. Some of them are curved also, but we discuss first about plane mirrors, then we discuss about the curved one, right? तो Yes. हमें ये आइडिया तो है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होगा, राइट। लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमारे पास मिरर में हमें नजर आती हैं। हमने उन प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। और लेट्स सपोज आपके पास एक लेटर लिखा हो, ठीक है, और इस लेटर को आपने ऑब्जर्व करना हो मिरर में, तो इमेज क्या होगी इस लेटर की? Inverted? इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल ठीक। हम ए नहीं लिख सकते, वरना ए लिखते क्योंकि ए की इमेज हमें एक जैसी ही दिखेगी, हमें उसमें इन्वर्जन पता नहीं चलेगा, राइट।
So if we want to draw the image of this letter in the mirror, so image is going to be inverted one. एंड इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट साइड हमें राइट पर दिखेगी और राइट साइड हमारे पास लेफ्ट पर हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, राइट? So letter is going to be of same length but in inverted way. Somewhere like this. तो इन्वर्टेड इमेज हमें वहां पर मिलेगा मिरर्स में, और उसे हम इन्वर्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास वहाँ लेफ्ट साइड आपको राइट पे मिलती है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट पर मिलती है. So that's why we call that image as the inverted one. And if we discuss about the size of image, if we discuss about the nature of image which is going to be formed in the mirror, so what will be the nature of image? Is it real or virtual? Virtual? Why? What is the basic difference between real and virtual image? Sir, I don't remember. Okay. So first of all, if we discuss the difference between these type of images, first one is real and the second one is virtual. So if we discuss about the real one, so the real image can be observed on a screen. It can be observed on the screen, right? So if we discuss about the real one, so real means if there is an image of some object, so that image is going to be formed on the screen, right? And if we discuss Yes. about the virtual one, so this image cannot be observed on the screen, right? So this image cannot be formed on the screen. It cannot be formed on the screen. और अगर हम सिंपल वर्ड्स में इन्हें डिस्कस करें, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पर देख रहे होगे तो आप उसको रियल कंसिडर करोगे, और अगर आप उसी ऑब्जेक्ट की इमेज को फ्रंट से ऑब्जर्व करो, लेट सपोज अगर हम मिरर की एग्जांपल लें, तो मिरर में हमारे पास लाइट पास नहीं हो सकती, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसमें हम इमेज को फ्रंट पे ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्योंकि लाइट रे उससे क्रॉस नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से हम उसके थ्रू नहीं देख सकते मिरर के. तो इसलिए प्लेन मिरर्स में जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, राइट? Yes. So the image of that object is going to be virtual. And if we discuss about the orientation, so you already mentioned that image is going to be inverted. Inverted in the sense that right is going to be on the left and left is going on to the right side. Okay. And third one, the third property about the size of image. Image is of the same size of object or different from the size of object? Same size? Yes, same size. So the size of the image will also be same.
as the size of object placed in the front of the mirror, right? Any confusion? Sir, can you explain the reason why it's virtual? Yes, वर्चुअल इस तरह से हम इसे कंसिडर करते हैं क्योंकि एक तो हम कह रहे हैं कि स्क्रीन पर ऑब्जर्व होना, राइट? लेकिन अगर आप मिरर्स की एग्जांपल में देखो तो मिरर तो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट? ये जो प्लेन मिरर हम यूज कर रहे हैं ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट? Yes. और अगर हम इसके बैक साइड पर या इसके ऑपोजिट साइड पर स्क्रीन लगाते हैं तो उस स्क्रीन पर हमें इमेज नहीं नजर आएगी, ऐसा ही है? मतलब आपके फ्रंट पे मिरर हो और आपकी बैक साइड पे आपकी स्क्रीन हो तो आपकी इमेज उस स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, उस मिरर में नजर आएगी, राइट? Yes. तो इस रीजन की वजह से हम उसे वर्चुअल कंसिडर करते हैं, राइट? Yes. तो एक रीजन आपके पास ये होता है कि हम इसे वर्चुअल कंसिडर करते हैं क्योंकि अगर हम ट्रांसपेरेंट लेंसेज की एग्जांपल को कंसिडर करें, जब हम आगे लेंसेज स्टार्ट करेंगे तो लाइट उसके थ्रू पास हो सकती है, राइट? तो वहां पर रियल और वर्चुअल दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स यूज होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो सरफेस है, हमारा जो मेन पर्पस है, मेन सोर्स है रिफ्लेक्शन का, उसके अलावा हम कहीं और स्क्रीन पर इमेज नहीं देख पाते, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, राइट? Yes. और क्योंकि लाइट रे पास नहीं हो सकती यहाँ पर इस मिरर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर एक रीजन ये है कि लाइट रेस पास नहीं कर सकती इस मिरर को, तो इस वजह से हम इसकी स्क्रीन पर इमेज नहीं देख सकते। लाइट कैन नॉट पास थ्रू द मिरर। अब जब वो पास ही नहीं कर सकती तो उसकी इमेज आपके पास स्क्रीन पर आपको नहीं मिलेगी, राइट? विच इज द डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज। Yes. तो ये आपके पास डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल में।